In this video, we're going to talk about depth limited depth first search. So the problem that we are facing with depth first search, that it can go to an infinite depth that we have already explored, and a structure like this could, where their repeat states could lead it to infinity. However, if we have some knowledge about the environment, for example, if in Pakistan, if we look at the roadmap of Pakistan and then we conclude that किसी भी शहर से दूसरे शहर तक जाने में मैक्सिमम जो स्टॉप्स आएंगे वो 36 हो सकते हैं. Okay? तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टॉप आवर सर्च एट द 36 डेप्थ. तो हम कहेंगे जनाब कि हमारे डेप्थ पर सर्च इट विल नॉट गो बियॉन्ड 36. So 36 is, I'm just 36 it's not a calculated number, it's just a idea, that is just a number that I came about. So just अगर मैं इसको लिमिट कर दूं किसी खास जगह पे कि उस खास जगह से नीचे नहीं जाएगा, then it will essentially be limited in depth and then it will be complete. Okay, the depth first complete हो जाएगा, and because of the memory requirement that it has, memory efficiency जो कि इसकी already exist करती है, that will be much better to use as compared to breadth first search. Okay. तो डेप्थ लिमिटेड सर्च हम करते क्या जनाब के भी, if we have some intuition about the problem, then we can use this intuition and limit our search to a certain point. Or we can say janab ke in a map that we have, any city can be reached from any other city in post 36 stops or 36 midpoints, intermediate points. Okay, so then we can limit our search, and then this way we can further improve the performance of our depth first search. Okay. In contrast, if we do not know this thing, then we can do one other thing, and this is what we call iterative deepening search. Iterative deepening search combines the aspects of both breadth first search and depth first search. IDS is optimal like breadth first search and fast like depth first search. And how come? हम करते क्या है जनाब के, हम डेप्थ लिमिटेड सर्च का आइडिया लेते हैं. फॉर एग्जांपल के अगर मेरा एक सोल्यूशन था, तो लेट मी इनिशियल स्टेट थी और मैंने डेप्थ ये लिमिट मैंने लगा दी. तो यहाँ तक आना, एंड देन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट. सही, सपोज कर. बट व्हाट इफ कि मेरा गोल नीचे एग्जिस्ट करता था, then depth limit search will never find this solution because मेरा गोल इसके पास था. तो डेप्थ लिमिट सर्च क्या करती है जनाब के, डेप्थ लिमिट सर्च स्टार्ट करती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ, आइटरेटिवली इंक्रीज करती है डेप्थ को. तो पहले डेप्थ होती है जनाब 1, तो इसे एक नोड एक्सप्लोर करता है. फिर डेप्थ हो जाती है तो पहले डेप्थ होती है 0, तो कोई नोड एक्सप्लोर नहीं करता, एक सिर्फ इनिशियल स्टेट के अलावा. डेप्थ 1 होती है तो फिर ये एक नोड एक्सप्लोर, एक लेवल को एक्सप्लोर करता है. डेप्थ 2 होती है तो जनाब फिर दोबारा से डेप्थ उसकी डेप्थ को एक्सप्लोर करता है, सो ऑन सो फोर्थ. व्हाट वी डू, वी आइटरेटिवली इंक्रीज द डेप्थ. तो इससे होता है जनाब के हर इंस्टेंस के ऊपर हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च लिमिटेड रहता है, और क्योंकि हम मुस्तकिल अपनी इंक्रीज कर रहे हैं अपनी डेप्थ को, तो हम इवेंचुअली कभी ना कभी गोल तक पहुंचेंगे. लेकिन एक दफा अगर हमारा लिमिट यहाँ थी, तो नेक्स्ट टाइम लिमिट यहाँ हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम मे बी यहाँ हो जाएगी, देन इवेंचुअली आई विल फाइंड दिस गोल. ओके, एंड लाइक ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, इट विल ऑलवेज फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इट विल ऑलवेज फाइंड द optimal solution like breadth first search. This is the main advantage of using iterative deepening search. Okay. Because both of the nodes are at the bottom search tree, it is not a big waste to iteratively regenerate the top. तो अगर आपने एक बार generate कर लिया, तो आपको बार बार उसको generate करने की जरूरत नहीं है. Just you have just found the top node, तो आप उसको नीचे से जो explore जो है वो करते रहते हैं. Let me give you an example of iterative deepening search will work अगर हम इसको यूज करते हैं for our depth limit from 0 to 3. Okay, so limit 0 is we are just looking at the root node. Limit 1, अब हमने एक डेप्थ बढ़ा दी, तो यहाँ पहले A जाएगा, फिर B, फिर C, much like breadth first search. Limit 2 कर दी तो जनाब you can see जनाब it is working like depth first search but in limited environment, and limit 3 and so on so forth. So you can see जनाब के how can we explore these things जब तक हम iteratively deep depth को increase करते हैं, eventually we'll find a solution that will combine the best of both worlds, both of breadth first search and eventually depth first search as well. Okay. So idea है जनाब के iteratively जब increase करते हैं आप, तो आपकी जो number of expansions हैं वो iteratively increase हो रही होती हैं depth wise. This is something that we have to take care of. But eventually अगर हम उसको asymptotic case में देखें, तो the number of node expanded by both for breadth first search and depth first search will almost be the same. तो अगर मेरे पास ब्रांचेस फैक्टर 10 है और मेरी डेप्थ 5 थी, तो जनाब तो आप देख सकते हैं इस कैलकुलेशन के जरिए से
The number node expanded by both breadth first search and depth first are almost identical. They are not much there's not a difference between breadth first and depth first search. However, अगर breadth if the branch size is 10, then only we have explored 11% more nodes, but with the advantage कि हमारी जो स्पीड है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह की होगी, जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च गारंटी जो है वो नहीं कर रहा होता. तो याद रखिए जनाब कि इन जनरल जब हमारी सर्च स्पेस काफी लार्ज होती है और हमें डेप्थ नहीं पता होती सोल्यूशन की, तो जनाब तो इटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है वो प्रेफर करी जाती है ऑन बोथ बीएफएस एंड डीएफएस, एंड इट्स अ वेरी यूजफुल सर्च जो कि हम कर रहे होते हैं. ठीक है. So let's stop over here in this video. In the next video, we'll talk about uniform cross search.